is patriotism? That is the small question we are asking today, which has some very big answers. Patriotism means different things for different people. But today I have a guest with me who has literally named his YouTube channel Deshbhakt, which is Hindi mein patriotism. Patriot, actually. Please welcome Akash Bandopadhyay, or as the British would call him, Akash Banerjee. He's a YouTuber, political satirist, and commentator. Hello, Akash. Hello, and yes, not very patriotic of the British to change our surnames, but that is what they did. Their sense Yeah. of patriotism said that they need to get the work done, and that's why from Bandopadhyay we became Banerjees, from Chattopadhyay we became Chatterjees, from Roy Chaudharys we became Roy. So, yeah, that's the Yes. story. Your character should have been called Bhakt Bandopadhyay, not Bhakt Banerjee. Yeah, I mean, in a classical anti-colonial stand, yes, it should be Bhakt Bandopadhyay. Exactly, Maybe in right? season X or season 56, we might actually get him down there also. Yeah. Taking full credit for it if you use it, okay? And our union leader of spectators today is a wannabe influencer, I would call him. बहुत ज्यादा एंथू कटलेट आदमी है, and also a देशभक्त. Please welcome Snayhil Aneja. Thank you, thank you. He's a creator at IVM, and he is a host of IVM Pop on he's a host of Pop Rap on IVM Pop, our channel, pop culture channel. Shit, I need to get that right again. आप ही ने चेंज किया है मेघनाद. मैंने ही चेंज किया है. And he's going to have a very, very fun show coming soon. It is India's first audio reality show. We will talk about that later more. Yeah, we are missing reality shows after Big Boss. Yeah, sure. We want more of them. Yes. आकाश, मैंने न्यूज लॉन्ड्री से इधर आया और अब मैं रियलिटी शो बनाएगा. So that's the idea. So मैं कुछ भी करेगा basically life में. And Snehil is my first bakra. So hello Snehil, the first bakra. Hello Meghnad. Hello. Hi. Thank you for being here. I want to ask you this question first. What according to you is patriotism or देशभक्ति? मुझे पता होता ये टॉपिक है तो मैं ऑरेंज पहन कर आता आज. बट अभी तक जितना मुझे ये समझाया गया है आज की सोसाइटी के हिसाब से कि पेट्रियोटिज्म ये है कि अगर सिनेमा हॉल में चाहे आप दबंग 3 देखने जा रहे हो पर उससे पहले नेशनल एंथम बजेगा ही बजेगा और आपको खड़ा होना ही होना है. अगर आप नहीं खड़े हो रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप पेट्रियट नहीं हो बेसिकली. तो आई एम होपिंग कि इस एपिसोड के थ्रू मेरे को एक्चुअली पता लग जाएगा कि अगर मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ किसी भी रीजन से, चाहे अगर मैं खांस दूं नेशनल एंथम के बीच में, तो क्या तब भी मैं नेशनलिस्ट हूँ या नहीं हूँ. बिल्कुल. I think that's a very interesting definition of patriotism. Abhi, Akash, what is patriotism according to you? मेघनाथ, जो आपने बोला ना कि चैनल का नाम देशभक्त क्यों है, और बहुत सारे सवाल आते हैं इसी चीज पर, और स्नेहल ने जो अभी बोला उसी के वजह से ही शायद चैनल देशभक्त है. इज बिकॉज व्हाट ही सेड, ऑफ कोर्स ही सेड इट इन गुड फन एंड ह्यूमर, लेकिन जो परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म एक्चुअली हैज चेंज्ड. एंड पीपल टुडे वुड एक्सपेक्ट कि भाई नेशनलिज्म का मतलब है कि मैं भगवा पहन कर आऊंगा, मैं ऑरेंज पहन कर आऊंगा. नेशनलिज्म का मतलब है कि मैं सिनेमा हॉल में खड़ा होऊंगा. मजे की बात यह है कि अब आपको सिनेमा हॉल में नहीं स्टैंड करना है. एटलीस्ट मैं नोएडा की तो बात कर ही सकता हूँ. आजकल मैं जाता हूँ जब हॉल में, अभी पैंडेमिक के बाद पिक्चर देखने के लिए, वेरी क्वाइटली उसको हटा दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत पहले ही आ गया था कि दिस इज नॉट कंपलसरी. हमने एक एपिसोड भी इस पर किया था. बहुत मजे की बात ये पता चली कि पार्लियामेंट में पूरे एक सेशन में, मेघनाथ आप तो पार्लियामेंट कवर करते हो, पूरे सेशन में एक बार नेशनल एंथम बजता है, और यहाँ आप कह रहे हो कि दिन में 50 बार नेशनल एंथम बजेगा. और भी मजे की बात, सुप्रीम कोर्ट में नेशनल एंथम कब बजता है? एक बार भी नहीं, कभी भी नहीं, पूरे साल में कभी नहीं. सो ये सब जो मजेदार चीजें जब लोगों ने पॉइंट आउट किया, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भैया देखिए, इसको हम कंपलसरी तो नहीं कर सकते. लेकिन इमेजिन 2-3 साल पहले दिस वाज द बिगेस्ट इशू हमारे देश में कि थिएटर हॉल में
नेशनल एंथम बजेगा सनी लियोनी के पिक्चर से पहले। आप तो यू आर टॉकिंग अबाउट दबंग 3, सनी लियोनी के पिक्चर के पहले भी मुझे खड़ा होना पड़ेगा। बताइए पिक्चर से या पहले कैसे हो सकता है ऐसा? तो मेटाफोरिकली खड़ा होना पड़ेगा, बट या मैंने कुछ नहीं बोला है। आप यू आर यू मैंने आर कुछ नहीं यू आर बोला, यू आर टेकिंग मैं भी आउट कुछ नहीं थिंग्स। बोल रहा। सो ए बी, क्या ऑरेंज पहनना, भगवा पहनना नेशनलिज्म है या नहीं? और इसीलिए शायद हमारे चैनल का नाम भी देशभक्त है, बिकॉज वी बिलीव दैट धर्म या हॉल में नेशनल एंथम के लिए स्टैंड अप करना, और वो भी करवाना जब आप खुद नहीं करते हो पार्लियामेंट में, ये नेशनलिज्म नहीं है। ये एक छल है, एक डिस्ट्रैक्शन है लोगों के लिए। तो नेशनलिज्म एक तरफ एक है। sorry interrupt, I'll just interrupt you a little bit. I think you're using patriotism and nationalism interchangeably. तो उस पे I wanted to sort of dig deep. Why are you using it interchangeably? Is this the same thing? सो मेघनाथ, वी मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप मुझसे हम्म। पेट्रियटिज्म का डेफिनेशन पूछोगे और नेशनलिज्म का डेफिनेशन पूछोगे, बहुत बार ये इंटरचेंजेबल डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। आई कैन Yes. गिव यू हम्म। आई कैन गिव यू बड़े बड़े कोट्स दैट पेट्रियटिज्म इज हम्म। डिफेंडिंग योर कंट्री फ्रॉम योर पॉलिटिशियंस, विच इज समथिंग दैट वी एक्चुअली बिलीव इन। हम्म। बट उसका मतलब क्या है? दैट यू डोंट बिलीव इन द पॉलिटिशियंस? हम्म। हमारा वी ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल ऑन द देशभक्त। और मैं आपने मुझसे बोला कि इस पर डिस्कशन होगा, तो मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं पेट्रियटिज्म क्या है और नेशनलिज्म क्या है, मैं ये सब सोच समझ के आऊंगा और आई विल ड्रॉप सम बिग कोट्स और माइक ड्रॉप हो जाएगा एंड मेघनाथ विल से चलो यार ये तो मैंने हो गया, आज तो वायरल हो हम्म। जाएगा पॉडकास्ट। No, ये तो लेकिन मेरा जॉब है, आकाश। हाँ, आई एम गोइंग टू ड्रॉप द हेवी कोट्स। गो ऑन। लेकिन जो सिंपल परिभाषा आज तक समझ में आया है, वो ना किसी रिलीजन को चैंपियन करना होता है, वो ना अल्ट्रा नेशनलिज्म ढोंगीपन होता है। पेट्रियटिज्म अकॉर्डिंग टू मी, अगर बहुत ही सिंपल तौर तरीके से आप मानो, तो इज बीइंग एन अलर्ट सिटीजन, is being an active citizen, हम्म। is being a questioning citizen, and somebody who says that मेरा देश कहाँ जा रहा है। अगर एक लाइन में बोलूं, who is a हम्म। patriot? A patriot is a person जो कह रहा है कि मेरा देश कहाँ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, उसको हम्म। पीछे कौन रोक रहा है, और मैं सवाल सब पर करूंगा। जो मेरे हम्म। देश को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे देश के प्रोग्रेस में आ रहा है, अड़चन दे रहा है, मैं उसको सवाल करूंगा। वो लीडर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो सकता है, वो लीडर ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो सोसाइटी भी हो सकता है। देश को आगे जाने से बहुत सारी फोर्सेस हमें रोकती हैं। उसको हम्म। सवाल करना, उस पर सवाल करना पेट्रियटिज्म है। That is my simple definition without having an actual great quote about it, but that's a word. You know, the basic definition, if you had to give about patriotism, I mean, मैं तो dictionary definition दे रहा हूँ अभी. It says devotion to and vigorous support for one's country. I would say, you know, patriotism is like a mix of love and loyalty for your country. Maybe that way, if you want to look at it. Snehal, I wanted to ask you, like, you consider yourself a Deshbhakt, right? I do too, to be honest. Yeah. And I think Akash does in his own way as well, right? What do you think it means when you say, I am a Deshbhakt? सो एज आकाश राइटली सेड, सो मैं पहले पॉलिटिक्स में या देश में क्या चल रहा है उससे मैं बहुत ही अलूफ रहता था, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता था क्या है क्या नहीं है, अंटिल आई जॉइंट कॉलेज। कॉलेज ज्वाइन Okay. किया, वहाँ पे थिएटर सोसाइटी ज्वाइन किया, थिएटर सोसाइटी ज्वाइन किया तो पढ़ना शुरू किया, न्यूज़ फॉलो करना शुरू किया। एंड जैसे ही जब आपने पूछा कि पेट्रियोटिज्म तुम्हारे लिए क्या है या क्या नहीं है, द रीज़न व्हाई आई वाज़ वेरी मतलब स्पॉन्टेनियस एज़ इन कि मुझे पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे साथ एग्ज़ैक्टली ये चीज़ हुई थी जब हम लोग एक जगह नाटक प्ले करने गए थे। तो हम लोग Hmm. दिल्ली के कॉलेज में नाटक परफ़ॉर्म करने गए थे, एंड वहाँ पे हमारा जो नाटक था दैट वाज़ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट। उस टाइम पे जो Hmm. पॉलिसीज़ या जो चीज़ें हो रही थी, हम लोग उन चीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे। एंड जितना भी टाइम हम प्रैक्टिस करते थे, हमारा जो सोसाइटी प्रेज़िडेंट कह लो, कन्वीनर कह लो, वो हमें बार-बार ये चीज़ समझाता था, पढ़ने को कहता था कि नेशनलिज़्म और पैट्रियोटिज़्म सिर्फ़ इतना नहीं है कि तुम्हारे किसी एक जिस पॉलिटिकल पार्टी को अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसके लीडर ने अगर कुछ कह दिया तो तुम आँख, कान सब बंद करके उस चीज़ को मान लो, सुन लो और उसको पत्थर की लकीर समझ लो। वो जो उसने बोला है उसको पढ़ो,
समझो, आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझो, एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस आस्क, बिकॉज ही इज योर लीडर, इट इज हिज जॉब टू अगर हुँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा देश आगे नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रहा है, कैसे बेटर हो सकता है, इन सब नीतियों को पढ़ो बेसिकली। सो हम लोग हुँ, ऐसी कुछ चीजों को सवाल करते हुए हमने एक नाटक बनाया था, जहां पे हमें परफॉर्म करने से रोक दिया गया था, सेइंग हुँ, कि तुम लोग नेशनलिस्ट नहीं हो, तुम लोग हुँ, पेट्रियट नहीं हो। और लिटरली ये बोला गया था कि लाठी-वाठी खाने से बेटर है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। हमारी राइट। परफ़ॉर्मेंस से 2 नाटक पहले हमें ये बोल दिया गया था कि तुम चले जाओ, लड़कियाँ-वड़कियाँ भी हैं, ऐवें ही बवाल हो जाएगा, फेस्ट का टाइम है, सारे अच्छे मूड में हैं। एंड देन दे साइटेड दीज़ 2 एग्ज़ाम्पल्स कि हुँ, आप जैसे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको दिक्कत है कि नेशनल एंथम क्यों बज रहा है। आप हुँ, जैसे लोग हैं, इनको इनसे दिक्कत है कि ये क्यों है? अरे! नेशनल एंथम बज रहा है तो बजने दो ना, खड़े नहीं हो सकते, अपनी ज़िंदगी के ये नहीं दे सकते, तुम 1.5 मिनट नहीं दे सकते। सो दैट इज़ व्हाई आई वाज़ वेरी, वो ये चीज़ मेरे दिमाग में छप गई है। कोई भी मुझसे नेशनलिज़्म या पैट्रियोटिज़्म पूछता है, इन अ वे मेरे माइंड में यही आता है कि भाई आजकल तो सोसाइटी ने यही बता दिया, तुम नेशनल एंथम में नहीं खड़े हो रहे हो सिनेमा हॉल में, या तुम्हें उससे दिक्कत है, तुम अगर तर्क भी करना चाहते हो फॉर दैट मैटर हुँ, किसी भी हुँ। चीज़ को लेके, तो सवाल मत करो बेसिकली। जय हिंद बोलते रहो। मुझे हुँ। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। And फुल that's very interesting, Akash. I wanted to sort of take this to you. लोग ऐसे behave क्यों करते हैं दो? Like, I mean, what is this conflation that is happening around us, which is कि अगर आप national anthem में नहीं खड़े हुए तो आप देशभक्त नहीं हो? What is this phenomenon? सो मेघनाथ, स्नेहल ने जो कहा ना इज सच एन अमेजिंग लिव्ड एक्सपीरियंस एंड इट सो Hmm. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स व्हाई ही सेड व्हाट ही सेड इवन इन जेस्ट। Yeah. और मैं मानता हूं कि यही असल में मास्टर स्ट्रोक है सरकार का। अगर Hmm. हम लोग इतने जो मास्टर स्ट्रोक्स की बात करते हैं, असली मास्टर स्ट्रोक यही है कि आपने इतने बड़े जनता को इस बात पर कन्विंस कर दिया है दैट नेशनलिज्म इज इक्वल टू ए रिलीजन, Hmm. nationalism is equal to a particular political party, nationalism is equal to not questioning। सबसे बड़ा Hmm. मास्टर स्ट्रोक। सवाल उठाना is a anti-national act। I'm saying this with, Hmm. I'm not even saying this with, in a semantic sense, I'm saying this with full responsibility without sarcasm। Hmm. Questioning the establishment today is anti-national। इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मेघनाथ, यू विल फाइंड इट फनी। पहले जब हम देशभक्त चैनल पर एपिसोड्स करते थे, लोग कहते तुम झूठे हो, पाकिस्तानी हो, Hmm. स्पॉन्सर्ड हो। फिर हम अपना पेट्रियन स्पॉन्सर्ड लिंक दे देते थे, हाँ स्पॉन्सर्ड तो है, यहां से स्पॉन्सर आता है। नाउ व्हाट पीपल से, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है तुम्हारे, अच्छा ओके वी एग्री विथ योर फैक्ट्स, लेकिन इतना कहने की क्या जरूरत है, इतना पूछने की क्या जरूरत है? So they know the facts are right because I challenge them. There are so many episodes on YouTube. We don't delete Hmm. episodes. Have a look. Let me know what is wrong. Hmm. So now it is, but why question? Now that is why the next step is be positive. Why are you being Yes. negative? It is Hmm. not that you're wrong, but why are you being negative? So, you know, it's so sad what Snehal is saying is because not far long ago, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, हम लोग कोई भी प्ले, जितना भी कंट्रोवर्शियल हो, कितना भी सवाल पूछने वाला हो, हम कर सकते थे एंड इट वाज वेल रिसीव्ड, इट वाज रिस्पेक्टेड। टुडे यू हैव Hmm. टू टेक परमिशन, आपको कॉलेज अथॉरिटी से या परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरे प्ले का टॉपिक क्या है? Is that Hmm. patriotism? Is Hmm. that citizenry? Is that being an aware and alert citizenry? So I think that is the biggest master stroke. Now you're asking me why does it happen? Well, I live this life और इसको समझने की कोशिश मैं करता हूँ। कल ही दिल्ली में जैसे जिस तरीके का जो केस हुआ श्रद्धा का, Hmm. एंड दैट केस, gruesome murder, this guy Aftab Poonawala, Hmm. Hmm. whatever, chops the girl's body into 35 pieces, and Hmm. immediately it started taking the form of love jihad। Hmm. मेरा एक ही सवाल था, मैंने कल एपिसोड भी किया, मैंने कहा लव जिहाद का तो मतलब होता है कि मैंने किसी को पटाया, मैंने किसी की के साथ Hmm. शादी की, उसका रिलीजियस धर्म परिवर्तन किया, फिर बच्चे पैदा किए, वो होता है लव जिहाद। मैं किसी को उठा के मार दूं, वो लव जिहाद थोड़ी ना होता है। Hmm. सो आई वाज जस्ट एंड आई वाज लाइक पता नहीं इसका रिएक्शन कैसा होगा, बट डिसेंट रिएक्शन है। अनदर थिंग, बिकॉज वी टेंड टू बिलीव एवरीथिंग, 32,000 women have gone missing from Kerala। पिक्चर बन रही है Hmm. इस पे।
पिक्चर बन Yeah. रही है द केरला स्टोरी। Hmm. अरे Hmm. तथ्य कहाँ है, फैक्ट्स कहाँ है? अच्छा 32 नहीं, अच्छा 3200 दिखा दो, अच्छा Hmm. 320 मिसिंग वुमेन दिखा दो, अच्छा Hmm. 32 मिसिंग, अभी हमारे पास 32 मिसिंग वुमेन का भी नहीं है, बट ओवरऑल whatever the government, even the government figures say 155 people attempted to join, not actually joined, attempted to join, 32 Hmm. women का भी हमारे पास आंकड़ा नहीं है। But the ability of using mass media, of using social Hmm. media to convince people of what you want them to believe. So standing up before a movie में problem नहीं है. And Hmm. this, unfortunately, people like us, progressives, haven't been able to communicate. Standing up is I'll. not the problem. Forcing somebody to stand up is the Yeah. problem. It is the insult of the national anthem, according to me. अगर मैं सनी लियोनी के पिक्चर के सामने या कोई एडल्ट पिक्चर के सामने या कोई फॉरेन पिक्चर के सामने मैं नेशनल एंथम पे क्यों खड़ा हूं? Hmm. Is that my Hmm. right to ask that? Why am I being made to do that? Or like sheep, भेड़ बकरी की तरह आपने Hmm. बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो गया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। That is what is attempted to being done. थाली बजाओ, कैंडल जलाओ, कैंडल जलाओ। Hmm. Actually, That's the. okay, हाँ, so go on, sorry, Snail. sorry. Go on, go on. I wanted to share something. जब मैं छोटा था ना, तो शुरू से so the thing is, जब भी आप छोटे होते हो, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको गाइड करते हैं that you know this is your country, your आपके अंदर धीरे धीरे वो patriotism automatically build होता रहता है. And I come from a very nationalist family, if I can say it. Hmm. Hmm. मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे हमेशा ऐसे सिखाया गया था कि आपको झंडा दिखा तो आपको सैल्यूट करना है, यू रिस्पेक्ट योर country, you respect your flag, and I used to do this very actively. ऐसा कभी नहीं होता था कि that if I pass by a झंडा and I don't salute, ऐसा कभी नहीं होता था. It was just out of sheer respect for my country, and I still do Hmm. it. But now that when I see journalists, if I may call them that, Hmm. hammering it on the channel कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो, I was very happy to stand up on a national anthem. और मैं परेड होती थी, हम लोग घर में खड़े हो जाते थे, पूरा परेड हम लोग ऐसे देखते थे. और हाँ. यू नो टीवी पे भी अगर झंडा आता था, आई यूज्ड टू सैल्यूट एंड एवरीथिंग. बट देन जब तुम इस चीज को हैमर करते रहोगे ना, कील मेरे माथे पे रख के कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, वो फिर एक टाइम के बाद एक ह्यूमन नेचर के तौर पे आ जाता है. यार कर तो रहा हूँ, क्यों, Hmm. क्या हो Hmm. गया है? मैं Hmm. अपने दिल से आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं ऑटोमैटिकली कर रहा हूँ. तुमने वो कील मार के मेरे अंदर से शायद अब वो क्यों जगा दिया है, फॉर दैट मैटर. That's actually very interesting because, and that's what I was coming to. This love for country, ना, this concept जो है हमारे दिमाग में, वो बचपन से obviously मेरे भी दिमाग में डाला गया था, स्कूल में ही डाला जाता है, right? अभी recording करने से पहले there is a school behind me, right? They were playing all these nationalist songs and national anthem Yeah. baja, etc. The amount of times I feel guilty when the national anthem is playing every morning and I'm not standing, like when I first moved here, it was just like this reaction that I had ki, oh Yeah. shit, ab khada hona padega, and there's nobody watching, right? And there's nobody watching, there's nobody to judge me here. But then if there is someone around me, like there are like 5 people here and the national anthem plays, I would be even more concerned कि अगर मैं खड़ा नहीं हुआ कोई upset हो जाएगा, right? And it's so bizarre because मेरे घर के पीछे स्कूल है, वहां पे नेशनल एंथम बढ़ रहा है, वहां पे सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, बट देयर इज अ वे एंड अ प्लेस टू डू इट, राइट? मैं मेरे चड्डी में यहाँ पे खड़े हो के मैं क्यों करूं, राइट? दैट्स जस्ट सो बिजार टू मी. एंड सो जस्ट टू take this point a little forward, Akash, is it necessary to love your country? Is it Um, at all necessary? so I always say this on my channel also that love your family. सबसे पहले, your responsibility is towards your family. So family, a lot of people say nation first. I say family first, and then of course love your nation. And you know what? It is what you can. I find this a very superficial thing. I love my nation. बोल दिया. Soldier सियाचिन में खड़ा है. बोल दिया. किया क्या? So if you really love your nation, what have you done for your nation? So I don't think, saying this, I love my nation, I love my nation, I love my nation 10 times doesn't mean anything. Have you questioned for your nation? Have you questioned the people who are running your nation? So a lot of people say, तुमने क्या किया? I said, इतने अंधों को मैं facts दिखा रहा हूं. इससे बड़ा काम क्या कर सकता हूं मैं अपने देश के लिए?
Hmm. So Hmm. maybe you have to ask yourself, And what that are is you out doing? of love for your country, right? I mean, Of course so it is. that is I what I mean, was coming to. Yeah. Meghnad, a lot of people say, I would be the craziest person in the world if I'm doing it for money. After spending Hmm. 10 years of media, Hmm. going to radio, अपने से कसम खाई थी कि मैं फिर से न्यूज नहीं करूंगा, वापस आया फिर वही न्यूज के कीड़ा के वजह से, और वही काम मैं फिर से कर रहा हूं, बस मीडियम चेंज हो गया, यूट्यूब पे कर रहा हूं, वही Yeah. गालियां खा रहा हूं, वही फंड्स के स्ट्रगल हैं, इट्स ऑल द सेम, इट्स जस्ट दैट टेलीविजन से यूट्यूब मीडिया चेंज हो गया है, एंड आई एम अ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब, बट Hmm. it is Hmm. not like, one is rolling in money. And had I been doing some other sort of a cookery or a dance or an entertainment, I would have been making some maybe decent money. And you're talking about Absolutely. love, Meghnad, you're talking about Hmm. love for the Hmm. nation. I think we should put a flag of India right outside the US embassy in Delhi. Hmm. US embassy in Delhi. Hmm. जाइए कभी वीजा बनवाने के लिए, कुंभ Hmm. का मेला लगा है, कुंभ का Yeah. मेला. I am not even talking about the 800 days of waiting visa period. Even after the 800 days of visa period, even after, if you get an appointment, you have to go and see the madness that is there outside the US embassy. Oh, And it by the felt, way, no, it felt Akash. bad. Binda, let me finish. It felt Hmm. bad. It felt Hmm. bad Hmm. because दो चार लोग देखते हैं channel, so they came and spoke to me also, and they said, we are leaving for good. Hmm. It Hmm. felt bad that people are lining in front of the US embassy to leave my country forever. Hmm. And why is that happening? Are we questioning? Why is it that India today is the biggest exporter of skilled labor in the world? We have overtaken China also. Hmm. हमारे मैन पावर से दूसरे देश बेनिफिट करेंगे, उनकी जीडीपी बढ़ेगी. एंड वी Hmm. ऑफन अंडरलुक, अरे कुछ लाख लोग ही तो जा रहे हैं, 6 लाख गए तो क्या हुआ? अरे यही तो 6 लाख क्रीम है, यही तो छह Hmm. लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स थे, यही तो 6 लाख टैक्स पेइंग ऑडियंस थी आपकी. गई. Hmm. Hmm. Right. No, and interestingly, what you just said, I just noticed this time. So I just went to Uttarakhand, right? And हम्म, we were crossing through UP, and then there is this stretch of road, like a good 50 odd kilometers of road, जहाँ पे हर 200 मीटर पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ओवरसीज जाने के लिए हमारे पास Yeah. आए. Like हम्म, visa application. In Punjab, when I was covering the elections, every second billboard is people saying कि हाँ कनाडा का PR ले लो, US का PR ले लो, and it's nuts, right? And there are so many of these agencies which take money to get you a PR, etc. Which also means if you are putting up these giant billboards every 200 meters, it's a very profitable business now. Like actually exporting people out of this country is a profitable business, and that is I understand what you're saying. It's very tragic, right? And on the other hand, there are people like Twitter ka CEO Parag Agrawal, so proud. ऋषि मेघनाथ, सुनक मेघनाथ, कभी just a small point. एंसेस्टर्स इंडिया में थे, सो प्राउड. It's we did an episode on brain drain, but I'm हम्म. sorry, it is an insult. Every हम्म. time a mega company CEO is an Indian, it is an insult. It is an Yes, insult. agreed. Why? Is Yeah. because they could have been CEOs of Indian companies and made them multinationals, and they are sitting there. Why is it that Indians are doing so well abroad? The only हम्म. answer in my head is that there is nothing wrong with Indians. They are very hardworking. The whole world knows about it. So there must be हम्म. something wrong in our system that is making them हम्म. go abroad. And the tragedy is that after doing all this nationalism, after standing at cinema halls, more people are going today abroad than they had ever gone before. तो आपकी 70 साल वाला आर्ग्यूमेंट भी यहां फेल कर जाता है, is because more people, the brain drain is back and back in full force. I just wanted to bring in Snayhil here for a second. Snayhil, you are a Punjabi, right? You come from that part of India which is very desperate to get out, right? And I know so many people now who are like, अरे मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे जाना है, right? And then once they go there, उनकी पूरी देशभक्ति जाग जाती है. And they're like, oh, India best country, we will show the हाँ, world India best country. मैं Do आपको you फन have पार्ट people? बताऊं मेघनाथ, हाँ, बताओ. Yeah. मैंने परसों कनाडा इमिग्रेशन के लिए कॉल किया. Mm. But that was so one of my very very close friends moved to Canada after his engineering, Hmm. and he's been there 4 years say, and अभी वो वापस आया है. तो he was talking to me and he just said कि चल तुझे अगर नहीं भी जाना, just see the procedure once,
because he was like, Hmm. so his arguments were basically standard of living is better, pay pay scales are better there. वहां पे so one very good example that he gave was कि अगर तुम बैंक में मैनेजर हो या Hmm. तुम केएफसी में मैनेजर हो, तुम्हारा जो ग्रेड ऑफ ऑक्यूपेशन है वो सेम है. Hmm. Wow. सो ही इज Wow. लाइक इफ अगर तुम मैनेजर लेवल पे हो तो तुम्हारा ग्रेड ऑफ ऑक्यूपेशन सेम है. सो कनाडा Hmm. में जैसे ओ ग्रेड जॉब्स, ए ग्रेड जॉब्स, बी ग्रेड जॉब्स, सी ग्रेड जॉब्स, ऐसे करके उन लोग ने ग्रेड बना रखा है. सो दिस इज अ वेरी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन बिकॉज डे बिफोर यस्टरडे आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिम और जितना मुझे उसने बताया मेरा वही इन्फॉर्मेशन है. तो ही सेड कि वहां पे जितना मेहनत तुम यहाँ पुट इन कर रहे हो और उतना ही मेहनत अगर तुम वहां पुट इन करते हो, रिटर्न्स और रिजल्ट्स उधर ज्यादा है. Hmm. So he was like कि and of course standard of living is better there, so he's like अगर if you are interested you should come there, you should give it a thought. And that's why I called in एक agency पे and then we were talking and it's bloody expensive. Hmm. It is How much is very it, by the way? expensive. So I'll How tell much you, did so they? their promise is 8 to 12 months में Canadian PR Hmm. and help in job hunting Hmm. and full all of this include all of this would cost me around 2 lakhs. Oh wow, 2 Yeah. lakhs. Yeah. That's I mean, I had heard 1.5. Like I think 2 years ago, Inflation. Hmm. someone who inflation हो गया exactly. So उनको रेज मिल गया. uh, there is a very interesting thing. So the OG social thinker and great man Baba Sahib Ambedkar, he had his definition of nationalism, but there was Jawaharlal Nehru's definition of nationalism as well, right? I'm just reading out this one quote from Jawaharlal Nehru. He wrote this letter to chief ministers in December 31st, 1949. He said, narrow communal bias often hides itself under high sounding phrases appealing to nationalism and patriotism, and thus it attracts some people. It must be remembered, however, that this is in its essence a reactionary and disruptive cry, not a unifying one, however, it may be called so. This twisting which you pointed out, Hmm. right, Akash, the master stroke that you pointed out, I think this is exactly it, which is this. अब ठीक है, अ, जैसे स्नेहल बोल रहा था कि यार I do love my country. I'm going to stand for the national anthem. I will salute the flag. But तुम लोग मुझे इतना फोर्स कर आके क्या कराना चाहते हो exactly, right? And I think Nehru was one of those people. And there was a big debate, Akash, between Nehru's internationalism versus nationalism. And abhi jo the rhetoric is कि Nehru loved the outside world more than he loved his own country, etc. वो भी वहीं से आता है. What do you think are freedom fighters were looking at when they were thinking of patriotism and national anthem? If you can. Meghnad, we were talking about, we were just saying that na bahar jaake nationalism jag jata hai, my country is the best. Hmm. And the funny part is, look at the numbers who are trying to come back into India. It's dismal. So despite so much Yes. of progress and vikas, nobody wants to come back. What is wrong Hmm. with people? They are only cheering us from there. Hmm. Must be some big Akash, bottleneck. my friend has an Indian flag in his room, but he never wants to come back. Mane, Yes. maybe Snehal is only telling us half the story, that there is a big line to go to Canada. Maybe there is a bigger line. It is waiting. हम process नहीं कर पा रहे Yeah. होंगे ना. The Process नहीं people कर are पा wanting रहे. to come back. They are so much in love. You are abroad. You are concerned about the state of India. I can understand. But how is it that you are abroad and you are saying my country is the best and not even wanting to come back, which is Hmm. so. I mean, there is hardly anything that could be more hypocritical than that. Hmm. I think that the freedom fighters would have had a very different opinion from the nationalism of what is happening today. Hmm. Because, look at the independence movement. And yes, we did have a split ultimately with the Muslim League, and then it did become religious. But the whole idea of independence was a secular idea. We wanted to overthrow the yoke of the British. And to Hmm. believe that suddenly nationalism is about religion and not questioning. Our freedom fighters were all about questioning the British rule. सोचो, Yeah. अंग्रेज भी सोच रहे होंगे यार हम गधे हैं यार, हम भी ऐसा कुछ एक बना देते that अगर if you question us you are anti national, if you question us, I mean they did have sedition, and it is very Yes, they did. ironic
it is Yeah. very ironic that the same sedition law that was applied onto the national freedom fighters, onto Freedom Bal fighters. Gangadhar Tilak, is Yes. applied to people who are again questioning the system, which is Right. so sad. It Yeah. is ironic. And the facts, Meghnad, the facts. And unfortunately, people don't just, we are so much in a post truth world. As if you've seen Newsroom, Will Hmm. McAvoy says, we choose the facts we want to believe now. So it is Yeah. not the Right. question of black and white facts. We will choose the facts that we now want to believe. But all I tell on my channel is, yeah, just look at the facts. Look at your per capita GDP. You are screaming that hamari overall GDP बढ़ गई है. Good. But don't Hmm. forget that our per capita GDP, we are struggling with Bangladesh. We were supposed to defeat China. We are Hmm. struggling, and we are actually having a debate. नहीं नहीं हमारा बांग्लादेश से ऊपर है, नहीं नहीं हमारा बांग्लादेश से थोड़ा नीचे. Even that is a humiliation for our country, because you Yeah. were supposed to thrash the biggest of the powers. Hmm. So just look at the numbers. Per capita GDP, women contribution, law and order, women safety, hunger index, human development index. Press Everybody, it freedom. seems, वो तो भूल ही जाओ. ये तो एंटी नेशनल है. वो तो that we will have our own press. We will have our own press ratings now. Okay, enough of this international press rating. We will have our own press rating. Sudhir, Yes. Arnab, Navika, they will be on the board of India's press rating. Of course. Snail, you wanted to say something? या सो जैसे आकाश आपने ये सारे मुद्दे जो हैं इनके टॉपिक्स ही एटलीस्ट जैसे आपने हेड्स बोल दिए फॉर दैट मैटर, बट डू यू थिंक, लुक एक सवाल है ऐसा, मैं डैड से उस दिन बात कर रहा था एंड बिकॉज आई वाज लाइक ये सेफ स्पेस है, यहाँ मैं कुछ भी क्रिटिसाइज क्वेश्चन कर सकता हूँ, पापा तो नहीं मारेंगे आके बेसिकली. तो ऐसा मत बोलो, मैंने तो ऐसे भी केसेस सुने हैं. मेरे साथ हुआ है, बट ओके, गो ऑन स्नेल. आई वाज लाइक ये सो अभी रिसेंटली न्यूज आ रही थी कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बहुत ज्यादा दिए जलाने का, आपने पढ़ी होगी. तो ऐसे आई डोंट वांट टू कॉल इट दैट, बट लाइक फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई विल से गिमिक्स. ठीक है, ऐसे ऐसे गिमिक्स क्या इसलिए हो रहे हैं ताकि जो मुद्दे आपने बोले उन पर सवाल जाए ही ना, उन पर ध्यान जाए ही ना. लाइक पीपल वुड नॉट क्वेश्चन पर कैपिटा इनकम इफ दे आर बीइंग फेड. ओ, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा दिए जलते, तुम्हें क्या पता है? So increasingly, Snehal, I used to, actually not I, we all, whenever a politician makes a very stupid statement, शंख बजा लो, कोविड चले जाएगा, we all laugh and we say, ha 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 ha. In our educated elite sense, we think that it is so stupid. Of late, I have stopped laughing because I understood, गधा तो मैं हूं, क्योंकि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है. वो अपने कोर कंस्टिट्यूएंसी से बात कर रहा है और उसकी कोर कंस्टिट्यूएंसी ये बात मानती है. इन द सेम वे, डोंट अंडर एस्टिमेट द पॉलिटिशियन. वो जो दिए जला रहा है, वो जानता है दिए जलाने का और वो ड्रोन से फोटोग्राफ लेने का महत्व क्या है, और वो कौन से दिल के तार पे खेल रहा है, और वो कौन सी भावनाएं जगा रहा है. A small other example is your Vande Bharat train. Should India have high-speed trains? Yes. Should India have bullet trains? No. I don't think we are ready for bullet trains. Should we have high-speed trains? Absolutely yes. And Vande Bharat is a good example of that. But the joke is that Vande Bharat is speedier than the other trains by only 1 to 5 kilometers more. That's it. They are the same bloody trains. They are just, actually it is just a marketing gimmick that the trains look better, but they are not any speedier than other trains, and they are being launched as if bloody bullet trains have come into India. So you try to have that debate, you say nahi, Vande Bharat kuch nahi hai, your father chalo, but some other fathers may actually thrash or get into a fight. And ye ho chuka hai. I'll give you a small example. We actually hired a video editor. The video editor is good, we like him, it's all done. Next day he calls and says, I can't join you, I'm sorry. So what happened? Are you not happy with money, etc.? We thought we agreed. No, मैंने अपने पापा को बताया. He said, तुम देशभक्त पे काम नहीं कर सकते हो. This is a real story. This is a real story. He's unemployed, but his father said, I will feed you, but you will not work there. I mean, it's a compliment that he knew and felt so much about us, which is nice. But this is a real story. So all I'm saying is, we have to appreciate and understand that the political quote-unquote gimmicks that you're saying, which I also agree, I'm not disagreeing with you, but those gimmicks actually work. They do work, and it evokes at a subliminal level, at a subconscious level,
आज भी अगर थाली और ताली बजाने को बोल दिया तो बजेगा. डोंट अंडर बजेगा, एस्टिमेट दैट. बजेगा. ऑब्वियसली बजेगा. And what नो, does it show? It shows blind faith. It shows I'm willing to stand. How on earth are you going to justify in a democracy that लोग ATM लाइन पे खड़े हैं और खुशी से खड़े हैं और बोल रहे हैं नहीं हम देश के लिए खड़े हुए हैं ATM लाइन पे? That एग्जैक्टली, was not a isolated incident. Lot of people said we have to do this much. इतना तो हमसे भी करना चाहिए. इतना तो करना ही पड़ेगा देश के लिए. हाँ, You know, जवान that's अगर the वहां rhetoric खड़े there. हैं तो हम ATM लाइन में तो खड़े हो ही सकते हैं for that How do matter. you beat that with logic, my friend? I You ask can't. myself that question. How Yeah. are you going to throw facts at such Yeah. people? So very very I, interesting thing happened. Snehil, हाँ जी. before you continue, Okay. मुझे एक break लेना है यहाँ पे, so Okay, I'm okay. just going to interrupt you guys. We are going into a break, but before we go into a break, I just wanted to make an appeal to the people who are watching this ELI10 episode. We saw that 63% of you are just watching it and don't subscribe to this channel. So please subscribe to this channel. Please do it. Please, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छा और भी चीजें मिलेंगी आपको. आकाश बंडोपाध्याय जैसे लोग आते रहेंगे. और the other thing that I wanted please to subscribe. Please subscribe. yes, please subscribe. Please subscribe. And the other thing I wanted to tell you is that we are soon going to launch a second show under ELI10. You will see it very soon. I will be announcing it later. But before I tell you more about patriotism and about Bhakti, I really want to talk about Bhakti. Let's go into a break. Hey, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On Explain Like I'm 10, Meghnad talks to Twitter celeb ROFL Gandhi and stand-up comedian Puneet Panya on what is trolling. On Vartalab, Akash and Raveen are joined by actor Shruti Seth. They talk about the weirdest events they've hosted and their life on social media. On the Musafir Stories, vlogger and YouTuber Antari Convesan takes us to India's little Lhasa, McLeodganj. And on Pop Rap, Snayhil, Nikhil and Karan discuss the recently concluded fantasy series House of the Dragon. Don't forget to subscribe to IVM Pop for the latest episodes. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcasts.com. We have some exciting stuff for you. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, spread the word, tell your friends, and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week. Bumble, Heads Up for Tails, Kotak Privy League Program, and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible. Hello and welcome to Explain Like I'm 10. We are asking the big question, what is patriotism? And we have with us Akash Banerjee, the Deshbhakt, and we have Snayhil Aneja, our union leader of spectators. Now, the word Bhakt in Deshbhakt is what I want to talk about a little bit more. Now, I want to read out a quote by my favorite quote by far by Dr. B.R. Ambedkar here. He has warned back then, like literally 75 years ago, about the dangers of Bhakti or hero worship. He says, there is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country. But there is a limit to gratefulness. This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, Bhakti, or what may be called the path of devotion or hero worship, plays a part in its politics, unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country. In the world, Bhakti in religion may be road to salvation of the soul, but in politics, Bhakti or hero worship is a sure short road to degradation and eventual dictatorship. Now, this I think is the best sort of quote that I can give you right now, because Akash, your channel is Deshbhakt, right? I just want to hear your thoughts, both of your thoughts on this whole worship phenomenon, right? I'll just contextualize it a little bit quickly. I don't think the country should be kept on a pedestal. I don't think any authority should be kept on a pedestal. When you keep something on a pedestal that is higher than you, you have this feeling ki, oh, wo jo bhi bolega, main karega. That, according to me, is bhakti. And I think that is extremely dangerous. Akash. So,
So on Deshbhakt, we are pretty clear about this. When we made the name, we were very clear, and I'll give you the logic about it also. Keep the country at the top. The problem is often we confuse the country, the nation, the state, the constitution, democracy with the institutions of the country. And when I say the institutions of the country, the political institution is just one small institution. There is the judiciary, there is the army, there are democratic institutions. All of them have to be subject to questioning. A lot of people say, अरे तुमने आर्मी पर, अरे सोल्जर कह दिया, आर्मी पर सवाल उठाया. सबसे, अरे पॉलिटिशियन तो छोड़ो, आर्मी पर सवाल उठाना, you will be butchered. But in the same vein, we have court of inquiry in the army. Log court martial hote hain because even the army knows that people within the system are rotten apples. And that is what patriotism is all about. That you ensure that the rotten apples in the system are not above question. और कोई भी जो पोजीशन ऑफ पावर में होता है वो अबव क्वेश्चन बनना चाहता है, चाहे वो आर्मी हो. पाकिस्तान में देख ही लिया, आर्मी को अबव क्वेश्चन करने का नतीजा क्या हो गया. आपके पास अभी सिचुएशन ये हो गई है. चाहे आप पॉलिटिक्स ले लो, इंदिरा गांधी ने भी कहा था मुझे मत सवाल करो. देख लिया हमने क्या हुआ देश के साथ. डिक्टेटोरियल पावर्स अगर आपने किसी को दे दिया तो देश का कैसे बंटाधार होता है हमने देख लिया है. नाउ वी आर सीइंग दिस अगेन, दिस होल थिंग ऑफ यूएपीए बीइंग स्लैप्ड. I mean, we did a fabulous episode. I mean, it is amazing how the Enforcement Directorate was first politicized by the Congress, and now it has been weaponized with nuclear weapons by the BJP. And today, if the ED wants to make your life hell, your life is hell. You are gone, man, without any questions asked. So, who is going to ensure that these institutions are not misused? A patriot, a citizen. I'll give you a small example. Look at what happened in America. Red wave aayega, red wave aayega, red wave aayega. Republicans आएंगे. Why? Because usually first term presidents के बाद जो mid term होता है उसमें opposite side ही vote पड़ता है. And Biden, let's be honest, hasn't really rocked the boat. Yet people understood that the Republicans are going to take away our bodily rights. ये तो gay marriages को कल illegal कर देंगे, ये तो abortion के पीछे already पड़ चुके हैं, आधा खत्म कर चुके हैं. So it was not a vote for the Democrats, it was a vote against the crackpot, the crackheads, and the Trump autocracy, literally, that was hoping to come in. So ultimately, it was the citizen of America that ensured that Republicans don't take control of the Senate. So that is what we try to do here also on Deshbhakt, is saying, Andhbhakt mat bano, Deshbhakt bano. Mane, love your country, question for your country, question people who rule your country, because वो ruler नहीं है. कुणाल काबरा ने बहुत अच्छा कहा था बहुत पहले, वो सर्विस प्रोवाइडर. They're governors. They govern the country. They don't उतना भी rule रिस्पेक्ट मत दो, उतना भी रिस्पेक्ट मत दो. दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स. 5 साल के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमें. हमने आपको चुना है, 5 साल काम करो. और Ravish put it in a very good way that you don't have to be a fan of any political party except the day that you choose to vote. जिस दिन वोट करने जा रहे हो उस दिन फैन बन जाओ, बटन दबा दो, but be a critique for the rest of the 364 days of the year. Unfortunately हम वो नहीं करते. मैं बता रहा हूं, देश की दिशा और दशा बहुत बदल जाएगी if the politician knows every day I will be open to the court of the public. कटघरे में लोग मुझे घसीट लेंगे पब्लिक, लेकिन अगर पब्लिक घसीटेगी नहीं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, मास्टर स्ट्रोक, हर दिन मैं मास्टर स्ट्रोक लगा सकता हूं, then I will do whatever I want. And that is what has happened with this country. हाँ, झटके पे झटके चले जा रहे हैं. डिमोनेटाइजेशन का झटका, जीएसटी का झटका, लॉकडाउन का झटका, बस झटके ही चले जा रहे तब से. You know, Snehil, do you want to say anything about Bhakti? हाँ, भक्ति पे जो एक और मास्टर स्ट्रोक की मैं बात कर सकता हूँ वो ये था कि जैसे बार बार हमने ये बात करी कि चम्मच थाली लेके लोग निकल आए थे बाहर कि तुम ये बजाओगे तो साउंड वेव्स आएंगे, उस साउंड वेव से कोरोना चला जाएगा. एक ऐसा म्यूजिक बनता है अगर तुम उससे स्टील को स्टील से करते हो, तो ये सब चला. एंड आई थिंक भक्ति पॉलिटिशियंस तक तो चलो थी, बट वहां तक सीमित नहीं है. एक और चीज हुई थी कि जब सारा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जब अपने घर के बाहर आके ये कड़छी चम्मच बजा रहे थे, ऐसी एक और सिमिलर चीज हुई थी जो थोड़ा सा अगर आप स्टेट लेवल पे आओ तो जब इन लोग ने मुंबई में देयर वाज दिस
thing that they had to cut a certain part of RA forest, वहां के जब पेड़ इन्होंने काटने थे for metro shelters, तो अचानक तो जब इन्होंने ये न्यूज़ आया कि भाई हमें वहाँ पे कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे मेट्रो शेल्टर्स के लिए, तो बहुत बैकलैश हुआ। रातों-रात पब्लिक आरे पहुँच गई, वहाँ पे उन्होंने करने नहीं दिया। बट द फनी थिंग स्टार्टेड हैपनिंग उसके नेक्स्ट डे से। नेक्स्ट डे से क्या हुआ, कुछ चुनिंदा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वीडियोज़ डालना शुरू कर दिया कि ओहो! मेट्रो क्या कमाल चीज़ है। मैं गाड़ी से आता तो मुझे इतना घंटा लगता, पर मैं लेट हो रहा था शूटिंग के लिए, टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं मेट्रो से आया। देश की प्रगति अगर होगी तो वो मेट्रो की वजह से होगी। तो ये भक्ति जो है, ये मतलब तुम एक भक्ति इस तरीके की भी है कि ऊपर से बोला गया कि हाँ भाई कड़छी चम्मच बजाओ तो बजाए गए। कुछ ऐसे लोग जो शायद उस ऊपरी बात को ना सुनते, उन्होंने एक एक ऐसा चार्ट बना दिया कि अगर मेरे भक्त नहीं हो, तो शायद इन 3 सेलिब्रिटीज़ के भक्त होगे। ये करेंगे, इंटरेस्टिंग, इनके भक्त इंटरेस्टिंग। होगे, ये करेंगे। हाँ, अगर ये कर रहे होंगे तो तुम भी ये करोगे और अगर ये कर रहे होंगे तो आई थिंक भक्ति वहाँ से स्टार्ट हुई, पर वो इतनी फैल गई कि अगर आप डायरेक्टली उधर के भक्त भी नहीं हो, तो अगर आप उनके किसी भक्त के भी भक्त हो, तो भी आप इवेंचुअली उस चार्ट में आ जाते हो। I'll ये just बहुत add one इंटरेस्टिंग line. चीज बोली। I'll हाँ, just गो add ऑन। one line to what Snehal is saying is इसकी लिमिट है क्या? एंड व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अलग-अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंटल कंट्रोल होते हैं। जब ये दिखता है कि अच्छा मेरे यूजुअल रात के 9 बजे एंकर से काम नहीं बन रहा है, देन एडिशनल फोर्सेस आर ब्रॉट इन और ये या स्पेशल फोर्सेस का एग्जांपल था। एंड मेरे ख्याल से काफी हद तक ये कन्वर्सेशन चेंज भी हो गया आरए फॉरेस्ट को लेकर कि भैया मुंबई मैंने आप घिस पिट रहे हो, लोकल ट्रेन में घिस पिट रहे हो और जब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तब आप हाय 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 2 पेड़ कर रहे हो। It failed also, Snehal, very interestingly. I'll give you an example where it failed. And मैंने उम्मीद तो नहीं थी मुझे जब फार्मर एजिटेशन हुआ, बिकॉज मैं उसको आई काफी वाज क्लोजली जस्ट कवर अबाउट कर टू रहा से, था। यस। यू हैड अ सचिन तेंदुलकर कम आउट एंड ट्वीट, और उस समय नया प्रोपेगेंडा ये बनाया गया था कि फार्मर एजिटेशन से देश की बदनामी हो रही है, देश अनस्टेबल दिख रहा है। एंड ही डिड नॉट ट्वीट अबाउट द फार्मर एजिटेशन, बट ही सेड एनी मूव टू डिस्टेबलाइज और डिफेम द या कंट्री इज नॉट वेलकम। And I am stunned till this date that the god of cricket was blasted to no end after या that tweet. सचिन तेंदुलकर की रिस्पेक्टेबिलिटी कम हो गई थी उस ट्वीट के बारे में। सो इस बिकाऊपन में भी लेवल और लिमिट है। आज अक्षय की पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, 4 फ्लॉप पिक्चरें हुई हैं इस या साल उसकी। इतने सालों से नेशनलिज्म का चोगा पहन के जो आदमी हिट पर हिट दिए जा रहा था, आज उसकी पिक्चरें फ्लॉप कर रही हैं। राम सेतु जो राम के नाम पर बनाया गया था, उसमें राम के नाम 1000 बार लिया गया है, लेकिन अब जनता कह रही है हमें इतना गधा मत समझो, हमारे इमोशंस के साथ ऐसे मत खेला करो, because the picture was made in a very bad way, to be very honest. Samrat Prithviraj also was wrapped up in very Yeah, very quick. also. So they were bad movies, and I am 120% sure they are bad movies made with the money, knowing fully well that लोग बस हिंदू का नाम देख के और श्री राम का नाम देखकर हॉल में चले आएंगे। ये अपमान है रिलीजन के लिए मेरे ख्याल से। And No, this is the absolutely milking. it is. Absolutely it is. Absolutely it is. Because what Snehil said, कि अगर हमारे भक्त नहीं है तो फिर हाँ कोई 10 लोग होंगे इन्फ्लुएंसर टाइप, उनके भक्त बना दो, एंड देन दे विल आल्सो लाइक से द सेम थिंग्स दैट वी आर सेइंग इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड देन इट्स बेसिकली द सेम रिजल्ट व्हिच इज एसेंशियली अंधभक्त बन गए बहुत सारे लोग, राइट? दैट इज द एसेंशियल पॉइंट दैट स्नेल वाज मेकिंग, व्हिच इज actually very true. There is a very interesting thing that again Dr. Ambedkar had said. He wrote in his book Partition of India, which is Pakistan or the Partition of India, that is the full name of the book. He describes nationality as consciousness of kind, awareness of the existence of that tie of kinship, or the desire of a separate national existence for those who are bound by this tie of kinship. To put it in a very simple way, what Ambedkar described nationalism as is not what Nehru said, right? Or not what we are looking at it today. His whole concept was कि तुम caste हटाओ, right? तुम कास्ट हटाओ, तुम ये सब सिस्टमिक जो हमारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है वो हटाओ, एंड देन यू बेसिकली have loyalty for your country. So as an identity, if you keep country as an identity and forget all else,
That is the only way this many people, diverse country will unite. And that was his nationalism, which is essentially unity, right? Equality, right? Fraternity and liberty, which is essentially what our constitution now says. um it's very interesting though, like हमारे स्कूल में ये सब चैप्टर्स आते रहते थे, मतलब लाइक 6वीं से लेके 10वीं तक हमको ये पढ़ाया गया था कि हाँ ये सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्सेट्रा व्हाटएवर, एंड दैट इज व्हाट पेट्रियोटिज्म इज. What has changed? Why is this suddenly like forgotten now? Like what do you think has happened? So, Meghnad, what did you study in college in otherwise? I Humanities? I did commerce, sir. So, this is a question जो बार बार आते रहता है, और I think you've also done a series on constitution and explaining the constitution. I think somewhere down the line पूरे देश को बैठाकर क्लास 8 की सिविक्स की किताब पढ़ानी जरूरी है. पूरे देश को कंपल्सरीली पढ़ानी जरूरी है. तभी उन लोग को समझ में आएगा कि हमारा जो देश का संविधान है, हमारे देश का जो मूल आधार है, हमारे देश के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो सोचा था हमारे देश के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इतना पढ़ लिख कर, इतने लोगों के साथ मिलकर, उसका मूल महत्व क्या है एंड व्हाई इट वर्क्स. What has happened, Meghnad, I think why it is vanishing, all these things are vanishing, is because हम लोग को सोशल मीडिया की घुट्टी पिलाकर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठाकर बोल दिया गया है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, इंडिया ब्लैक एंड व्हाइट है, नेशनल एंथम माने अप, और इफ नॉट देन यू आर डाउन. That is as simple as that. Unfortunately, India is not binary. India is not that simple. लोगों के आंख से सॉकेट निकल आता है, मुंह से आग निकल आता है, वॉर्मिट भी निकल आता है. मैंने एक एपिसोड में ऐसे मैंने रिसर्च एपिसोड था, इसलिए यहां बोल रहा हूं, ये ऑलरेडी इट्स ऑन यूट्यूब, दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले जाते हैं यूनिफायर ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स यूनिफायर ऑफ इंडिया, एंड जवाहरलाल नेहरू इज ऑफ कोर्स रिस्पांसिबल फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया. बट मजेदार बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर जब बात आई तो गेस हु वाज ओके और एमिएबल कि अगर जाना है तो जा जम्मू एंड कश्मीर टू पाकिस्तान. No Who problem. was this? So the historical fact is that because India was looking at a big gaping hole in the middle of its heart called Hyderabad, and trust me, Hyderabad had all the resources in the world to actually secede from India, and it did not want to come into the country Union, the Union of India. And his whole struggle was to ensure that ये हैदराबाद वाला सवाल को बंद करने की जरूरत है. उस समय कश्मीर वाला सवाल भी था. ये चिट्ठी में लिखा गया है कि आई एम एमिएबल, पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी गई है, आई एम एमिएबल टू विच एवर वे दिस एक्चुअली ब्लोज. इट इज एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज unlike what WhatsApp will tell you, is not a Muslim. He's actually a Kashmiri Pandit. yes. And he said, there is no way I am letting Jammu and Kashmir go to Pakistan. Vallabhbhai Patel's logic was that it was India's only Muslim majority state. Junagadh mein bhi hua tha issue that was solved, and this was the other pending issue. So irony is that Vallabhbhai Patel, for the unity of the rest of India, was okay in letting go of a particular part of India. Jawaharlal Nehru put his foot down and said, no, it is not. This is very interesting, Akash, because now the rhetoric is completely the opposite. Yeah. There are a lot of historical, fun facts. Guess who banned a certain organization that is very powerful today? Of course. Yes. So, and he's the god. He's the god now. उनके स्टैचूज बन रहे हैं. आर्टिकल 370 को लेकर इतना होता है. नॉर्थ ईस्ट में भी the same thing है. Let the states have their own flags. Let the states have their own little laws. Look at America for that matter. States have varied laws. Are they breaking up? Are they complete? I mean, come on. You have to see diversity also. And it is very, very worrying for somebody who studied a little bit of history. Pakistan went the exact way. They started saying, Bangladesh, you will behave like us, you will talk like us, you will have Urdu as a national language. And that is what generated this whole anger, and then the Mukti Bahini, and then of course India helping Bangladesh. But the fact of the matter is, don't try to straitjacket everything. One nation, one leader, one election, one language, one supreme leader. Mat karo yaar. We are a diverse country. Yeah. And Snehil,
just a experiment, okay? If I Mhm. say to you, ki, don't say anything against my country, what does that mean for you? Like, like, because, just this question, like, you are talking against my country right now, itna criticize kar rahe ho, chup raho. What does that make you feel? इट मेक्स मी फील दैट मतलब जो भी मुझे ये बात बोल रहा है वो मुझे इस कंट्री का सिटीजन ही नहीं मानता। अगर मैं उस कंट्री को सवाल नहीं कर सकता तो आई थिंक अगर मैं इस एक कंट्री का सिटीजन हूँ तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं सवाल कर सकूं। और अगर वो सवाल जरूरी नहीं है, हर सवाल ऐसा होगा कि शहद में उंगली डुबो के तुम्हें दिया जाएगा। सवाल कड़वे हो सकते हैं, सवालों को कड़वा होना चाहिए। और वो कहते हैं कि मतलब जैसे अपने को बचपन में बहुत छोटी सी चीज कही जाती थी कि सोने को सोना बनने के लिए थोड़ा तो आग में तपना पड़ता है। ठीक है? और अगर हम्म अगर मुझे देश को आगे बढ़ते देखना है, कोई देश परफेक्ट नहीं हो सकता। हम्म मैं अपने देश को, जो चीज़ें मेरा देश अच्छी कर रहा है, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मैं उनको सेलिब्रेट भी कर रहा हूँ। पर हम्म जहाँ मुझे कुछ एक कमी दिख रही है और अगर वो मुझे नहीं खल रही है, तो शायद मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न नहीं हूँ। तब शायद हम्म मैं नेशनलिस्ट नहीं हूँ। अगर वो मुझे कमी खल रही है, तभी आई थिंक आई एम अ ट्रू नेशनलिस्ट। एंड तभी अगर मैं सवाल कर रहा हूँ, देन दैट इज़ व्हेन आई से दैट आई एम अ ट्रू नेशनलिस्ट। जैसे अभी आकाश ने एक प्यारा-सा ट्रिविया दिया हिस्ट्री के बारे में। हमने जैसे फर्स्ट ईयर के नाटक में मैंने बताया ना, हमें वहाँ रोक दिया गया था। हम्म तो हम लोग और एजिटेट हो गए थे। सेकंड ईयर का नाटक हमने इसी पे बनाया था। कश्मीर, जूनागढ़ और नॉर्थ ईस्ट और आफ्सपा। हम्म। राइट एंड वी वर लाइक चलो ठीक है, तुमने गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं करने दिया, लेट्स जस्ट फैक्ट्स को उठाते हैं। फैक्ट्स को कैसे झुठलाओगे? तुम अगर हाँ हमें बोलोगे कि ये गलत है, हम तुम्हें टेक्स्ट दिखा देंगे। और हम्म हमने इस पे मतलब उसके बाद जब पहली बारी जब हमें नाटक के लिए रोका गया था, तो हमारा नाम अखबार में आ गया था कि ये एंटी नेशनल लोग हैं और ऐसा, हम्म ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ओ उसके वाओ, बाद से अखबार में आ गया था। हाँ, हाँ, अखबार में आ गया था। तो सर्टिफाइड ओके एंटी वाओ नेशनल। सर्टिफाइड एंटी नेशनल हम लोग। तो उसके बाद हमारे कॉलेज ने रूल कर दिया था कि आपको जो भी स्क्रिप्ट आप बनाओगे, आपको हमसे अप्रूव करवानी पड़ेगी। तो हम्म हमने फिर उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट बनाई थी और ये स्क्रिप्ट जाके दी थी, तो उन्होंने मना ही कर दिया था कि ये हम तुम्हें बनाने ही नहीं देंगे नाटक। बट द थिंग इज़ दिस इज़ वेयर नेशनलिज़्म, जो मेरा नेशनलिज़्म है और जो सोसाइटी का जो एक लार्जर पिक्चर चल रहा है नेशनलिज़्म का, कि ठीक है, ये जो सवाल हैं वो होंगे, तुम बात मत करो इनके बारे में, हम्म तुम मत बताओ, तुम बोलो ही मत इसके बारे में। वो चीज़ मुझे दिस लगता इज है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं अभी कि हुँ, अगर ये हमारा अभी एक टीवी डिबेट चालू होता अगर फॉर एग्जांपल राइट एंड यू हाँ। से आकाश गिव दिस एग्जांपल और यू गिव अनदर एग्जांपल की सवाल पूछते हैं तो मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा मेरा हुँ। राइट मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा मेरा तेरे पे चिल्लाऊंगा और बोलूंगा कि आई विल नॉट हियर एनीथिंग अगेंस्ट माय कंट्री यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट माय कंट्री लाइक व्हाट आर यू सेइंग एंड essentially the point is that the louder voices the loudest voice in the room as Akash had also like said newsroom um is winning right is setting the sort of the agenda and the rhetoric because it's emotional right the appeal that they are making is emotional. I just wanted to move to the last part of this podcast here where I want to talk a little bit about dissent. How important is dissent? What does dissent even mean, right? uh, is मेघनाद dissenting an मेघनाद unpatriotic act? Polo. मुझे ना 6th में, ये आपने जैसे ऊँची आवाज़ वाली बात करी ना, आई क्लियरली रिमेंबर मुझे 6th में देयर वाज़ दिस कन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग एंड मुझे एक बात बोलनी थी और वो बात आगे सुनी नहीं जा रही थी, तो मैं तेज़ बोलने लग गया था, चिल्लाने लग गया Hmm. था उस बात को। तो मेरी टीचर ने इंटरप्ट करके एक बात बोली थी, जो बात मेरे साथ अब तक है, कि इसने ये चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाओगे। Hmm. वेट। Arnab Goswami chooses to disagree with that statement. एंड आई जस्ट फील, जैसे अभी आकाश ने कहा कि पूरे देश को एक बार वापस छठी, 7वीं, 8वीं ले जाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग वो चीज़ें जो हम मतलब एज़ बेसिक, अगर मैं आपको बेसिक एग्ज़ाम्पल दूँ, कि ट्रैफिक रूल्स जो हमें चौथी में सिखाए जाते हैं ना, अगर Hmm. लिटरली पूरा देश इस टाइम पे वापस अपना जूनियर स्कूल कर लेना, तो आई थिंक हम लोग काफ़ी बेटर हो जाएँगे। यहाँ पे मैं एक प्लग करना चाहूंगा, लिसन टू हाउ टू सिटीजन ऑन IVM पॉडकास्ट नेटवर्क। हमने 8वीं कक्षा की बुक लेकर कॉमेडियंस के पास गए हैं
और उनसे बुक्स पढ़े. एंड announcement, How to Citizen season 2 coming soon. Shooting चल रहा है. आकाश, Dissent. So that हम लोग loudest voice बोलते हैं, लेकिन let's not, I always say is that there must be something else also. So it's not just the loudest voice, it is the emotional connect. And I always point out one thing. Look at the nomenclature. Meghnad, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, Right. जेएनयू Yeah. वाले, हाँ, लिपटार्ड. आपके पास क्या है? भक्त. मैक्सिमम, चलो रवीश ने दे दिया हमें गोदी मीडिया, but that's about Godi it. media. And by the way, this is not India. Look at what is happening in America also. The same sort of labels, easy, digestible, insult-laden labels. These things work. आप अपने इंटेलेक्चुअलिज्म में और अपने एलिटिज्म में लॉन्ग फॉर्मेट डिस्कशन कर लो, बट उनको मालूम है कि एक ट्वीट या एक वर्ड में आपको कैसे चुभाया दिया जाए. पंचर वाला. So it is very, very important in today's political discourse to understand that just like, everything is about reels and TikTok at this point of time, we also need to understand that people are consuming it in bite size and in a very simple way, and it has to be made. And Meghnad, you do good stuff, and I hope that more people consume that sort of information. So A, that needs to be there. B, as I said, that agar sawal पूछना ही तुम anti-national कर दोगे, तो how can you then say dissent is patriotic? Of course dissent is patriotic. But the only thing is that the definition of dissent has changed. आज मैं देखता हूं कि अगर CAA प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सबसे बड़ा हाय तौबा ये है कि रास्ता रोक दिया. रास्ता रोक दिया. अरे रास्ता रोक दिया. देश कैसे आगे बढ़ेगा? अभी तो, and I came across a very beautiful phrase. Protest and dissent is uncomfortable. Get used to it. There is no. It's supposed to be. It is. Yeah. There is no comfortable protest. But imagine the discourse and the level to which the discourse has been changed is, we will not even come to your demand. We will not even come to your point. तुमने रास्ता क्यों रोक दिया? हाय रे, मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा? So, unfortunately, there has to be a lot of going back to the drawing board that needs to be done. I think in an India where people are first reacting to a road being blocked, or it is being funded by some again, this is Indira Gandhi tactic, ki CIA fund kar raha hai protest. Absolutely. Sometimes same old tactics also work. देश बदनाम हो रहा है, बाहर से फंडिंग आई है. ऑल्ट न्यूज का एग्जांपल अगर आपने देख ही लिया होगा कि नहीं पाकिस्तान से फंडिंग आई थी, देन रेजर पे हैड टू क्लियरिफाई दैट वी डोंट इवन टेक इंटरनेशनल फंडिंग. तो तुम्हारा पाकिस्तान से फंडिंग कैसे आ सकता है? दैट्स व्हाई दे मैनेज टू एस्केप, अदरवाइज पता नहीं और कितना लंबा उस केस को खींचते. So I think there needs to be a going back to the drawing board, and that maybe the last one to go, I would say, is satire. But as we are seeing, even comedians, look at Veerdas, look at Kunal Kamra, look at Munawwar, comedians are not being allowed to perform. So comedy as a dissent is also a problem. Blocking roads is also a problem. And very soon, your and my YouTube channels and social media is also going to be a problem. The new social media guidelines are already coming in. So look at how dissent is being squeezed down to the last person. And we are witnessing it. The maje ki baat, we are seeing it coming. We've seen history of it. We are seeing it unfold in front of our eyes. Nobody cares. That's scary, I must say. But I know, like, I watch enough of your videos to know that this is what you say, and I think it's a very correct approach to dissent, I feel like. Last thoughts from Snayhil, then I will conclude. Snayhil, just one final question I have for you, and which I think will let you sort of give tips to people who are watching this. If you want to be a patriot, what should you do? पहले तो वो डिसेंट वाली बात पे मैंने एक बस आपके 30 सेकंड से 40 सेकंड लूंगा. मैंने ले लो. एक ना छोटा सा पीस लिखा था और हम लोग में परफॉर्म कर रहे थे. एंड इस पीस के बाद हमें रोक दिया गया था कि बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं सुन रहे हैं. वहां की अथॉरिटीज आ गई थी. तो दिस आई रोट जब CA/NRC के प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, एंड दे वर लाइक तुमको प्रमाण देना पड़ेगा कि तुम देश के सिटीजन हो या ये सब. तो इस पे मैंने लिखा था कि वतन परस्ती का जवाब तुझे विस्तार में मैं दे दूंगा, तू कश्मीर के हालातों का एक चिट्ठा आकर रख देना.
मेरे मैं होने का प्रमाण तुझे पोथों में मैं दे दूंगा, तू आसाम के कुछ पोथे खुले आकर रख देना। सराखों पर बैठाऊंगा हर कानून को तेरे, तू उल्लंघन की दास्तां बाबरी की कह देना। हर मजहब का इस मुल्क से ताल्लुकात भी समझा दूंगा, तू गुत्थी बस गोधरा की मेरी खातिर सुलझा देना। हर बस, ऑटो, टैक्सी स्पष्ट सुनवाई होगी। हर बस, ऑटो, टैक्सी की स्पष्ट सुनवाई होगी। तू लाठी जो चलाई थी मुकद्दमा जारी कर देना। मैंने रवैया भांपा है तेरा, हुकूमत की बास आती है। तू कर सके तो साहिब खुद को चौकीदार साबित कर देना। Oh, Snehal, that was beautiful. That was beautiful. Thank you. And Thank you. I love the fact that you had no idea what this topic was. You had no idea who the Yeah. guest is. And you just pulled it out of your. Yeah, love it. Thank you so much for that, Thank Snehal. you. Thank you. Just to conclude this podcast, I want to read something that Nehru has said, which I think is phenomenal. Again, Nehru's definition of nationalism, Ambedkar's definition. I'm reading Nehru's. Nationalism is a curious phenomenon which, at a certain stage in a country's history, gives life, growth, strength, and unity. But at the same time, it has a tendency to limit one, give one's thoughts of one's country as something different from the rest of the world. The result is that the same nationalism, which is the symbol of growth for a people, becomes a symbol of cessation of that growth of the mind. Nationalism, when it becomes successful, sometimes goes on spreading in an aggressive way and becomes a danger internationally. Whatever line of thought you follow, you arrive at the conclusion that some kind of balance must be found. This is actually very interesting because, in one way, the people who are proponents of patriotism and nationalism in its current form are saying कि इससे देश तुम्हारा आगे बढ़ेगा, but at the same time they are using the same feeling to shut down other people. But what Nehru says is that there needs to be a balance. Love your country, love your nation, be a patriot, but at the same time, continue questioning the establishment, continue being a true nationalist. And I think that is what Deshbhakt is also all about. Akash, where can people follow you? Do you have anything to plug? So all I'm saying is that people who want to question the administration, people who don't make the mistake, I'll just add one more line to it. Your Yeah. administration, your politician, your political party, your government is not the nation, not by a fucking Yes. long margin, not Yes. anywhere even close to it. Don't make the stupid, asinine call to think that your government, your leader is the nation. Our nation is much larger, much stronger, much varied, and has a rich history that can't be boiled down to one person or one political party. If you want that rich history nation to prosper, please go ahead and question whoever is ruling the nation, whether be it the BJP or the Congress or the Aam Aadmi Party, which other two are unlikely to happen in the near future. So continue questioning wherever, whenever, and right from your home. As I always say, Meghnad, last point. Don't we question our parents when they don't Yeah. take care of our health? Yes. Don't we question children when they do something wrong? Do we not love them that we are questioning, or do we question them because we love them? Why is it then Absolutely. so difficult to understand? Is that like we question our parents and kids out of goodwill, we question people who are running our nation because we say, ye kya hai? What is this? Why is this happening? Is this going to take my country to the top? So patriotism for me is saying my country, I love it, but my country needs to do some things to make itself the best. Nationalism is saying my country the best. If you question, I will thrash you. That is my definition of nationalism. So let's not be blind. Let's not be blind nationalists. Let's be positive nationalists. Let's be questioning Deshbhakts and take India forward in the coming years. So that's all I Akash, would like to say. I was in a debate once. It was like a in Bombay. There was this debate. I was there, and there was this panel, right? And there's this very famous BJP personality who was there, right? And I was essentially arguing for dissent, which is essentially dissent is important, etc. He said this to me on stage, right? Ki this man right here, you don't love your country, right? I said, of course I love my country. I just hate you. Right? So it's like, don't conflate the two things. I mean, I know we are running what out of the time. I'll just add one more, since we're adding a little bit of history, twists, and facts. Guess who were dissenters in their younger days? Narendra Modi,
in his Yes. page, NarendraModi.in, Emergency. Jan Abhiyan Andolan in Gujarat, one of the largest andolans of its time, very prominently said that he was part of this Absolutely. massive protest. Hmm. Arun Jaitley, like the flag bearer. I mean, if a rough comparison, Kanhaiya Kumar of his times, Absolutely. Ravi Shankar Prasad in Patna, burning the Hmm. effigy of Indira Gandhi. All Hmm. of these were dissenters, and they became top leaders and the people running the country at this point of time. And within their life cycle, within their lifespan, to have twisted and turned out to dissent, to saying that ye to JNU wala kaam hai, to make the word JNU is equal to anti-national, despite Yeah. it being one of the best universities. The irony continues. Jamia and JNU continue to be the best universities in India according to Government of India rankings. Even you Yeah. can't pull those universities down. Yeah. But Yeah. that's life. That's life. Snehil, where can people find you? Do you have anything to plug? Yes, you can find me on Instagram at the rate Snayhil, Snayhil, और यूट्यूब पे आई एक पेज है IVM पॉप के नाम से, वो पेज फॉलो सब्सक्राइब, ऐसा मैं सीख रहा हूँ अभी इन्फ्लुएंसर बनना कैसे होता है, एंड वो कैसे वो सीखने का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी एक शो आने वाला है, वो भी आपको मैं जल्दी बताता हूँ, बट डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, दिस आई हैव लर्न्ड। IVM पॉप चैनल पे उस पे एक शो है पॉप रैप जो मैं करता हूँ, वी मोस्टली टॉक अबाउट पॉप कल्चर, movies, books, TV shows, web shows. We talk about all that, and yeah, do follow that, and we'll be coming with some great content. अभी उसका एक एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इसके जस्ट बाद। Amazing. Watch out for Snehil's new show, which is coming Yes. soon. It is going to be fun. It is an audio reality show, as I said. I'm not going to reveal much more than that. Thank you for watching Explain Like I'm 10. Do subscribe. Do follow this channel for more interesting content. Thank you so much, Akash Bandopadhyay, for joining us. And I hope we Thank get you you. back for something else again. Absolutely. What a pleasure. What a great conversation. Thank you so much for having me over. Thanks. Bye. Thank you. Bye bye.